हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 इंग्लिश चैनल। आज हम स्कूल PTM में जाते हुए स्टोरी टेलिंग करेंगे। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आप इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं एक घरेलू महिला होने के साथ साथ एक इंग्लिश लर्नर भी हूं। Apart from being a housewoman, I am also an English learner. मुझे इंग्लिश सीखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। I don't get extra time to learn English. तो मैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस अपनी दिनचर्या को बढ़ाते हुए करती हूँ। कुछ इस तरह से। So I practice my English by murmuring my daily routine. Something a bit like this. मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज स्कूल में PTM है। I have got up because there is a PTM in school today. और मुझे जल्दी से अपने सुबह के काम खत्म करके स्कूल पहुंचना है। And I have to finish my morning course quickly and reach school. Students, आगे बढ़ने से पहले अब केवल इंग्लिश रिवाइज करते हैं। वीडियो पॉज करके आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। Let's start. Apart from being a housewoman, I am also an English learner. I don't get extra time to learn English. So I practice my English by murmuring my daily routine. Something a bit like this. I have got up because there is a PTM in school today. And I have to finish my morning course quickly and reach school. इसलिए मैंने अलार्म लगा दिया था जिससे कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊं। So I set an alarm so that I could wake up early in the morning. 5 बज गए हैं और मैं तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई हूं। It's 5 o'clock and I immediately stand up from the bed. वैसे रोज तो मैं 6 बजे उठती हूं। Usually, I wake up at 6 o'clock. नहाने के बाद अब मैं किचन में ब्रेकफास्ट तैयार करने जा रही हूं। After having bath, I am going to the kitchen to prepare breakfast. मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। I have had breakfast. Students, let's revise English sentences. So I set an alarm so that I could wake up early in the morning. It's 5 o'clock and I immediately stand up from the bed. Usually, I wake up at 6 o'clock. After having bath, I am going to the kitchen to prepare breakfast. I have had breakfast. हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नाउ कंटिन्यू। अब मैं जल्दी से बाकी के काम निपटा देती हूँ। नाउ आई फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क क्विकली। मैंने वॉशिंग मशीन चला दी है। I have turned on the washing machine. एक राउंड पूरा होने तक मैंने बर्तन धोए। I washed the dishes until one round was completed. अब मैंने लगभग सारा काम खत्म कर लिया है। Now, I have almost finished all the work. आखिरकार,
अब मैं मीटिंग के लिए तैयार होने जा रही हूँ। Finally now, I am going to get ready for the meeting. मेरी बेटी कह रही है कि मम्मी ज्यादा मेकअप मत करना क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं। My daughter is saying that, Mom, don't wear too much makeup because we are going to school. अब हम स्कूल के लिए निकल पड़े हैं। Now we have rushed for school. Students, let's revise English sentences. Now I finish the rest of the work quickly. I have turned on the washing machine. I washed the dishes until one round was completed. Now, I have almost finished all the work. Finally now, I am going to get ready for the meeting. My daughter is saying that, Mom, don't wear too much makeup because we are going to school. Now we have rushed for school. मैंने स्कूल के लिए ऑटो रिक्शा कर ली है। I have taken an auto rickshaw to school. और अब हम इसमें बैठ गए हैं। And now we have sat in it. ऑटो रिक्शा वाला खराब ड्राइविंग कर रहा है। The auto rickshaw driver is driving badly. फिर मैंने उससे सुरक्षित गाड़ी चलाने को कहा। Then I asked him to drive safely. अब फाइनली हम सही सलामत स्कूल पहुंच गए हैं। Now finally we have reached school safely. नहीं तो ऐसा लग रहा था हम स्कूल के बजाय अस्पताल में पहुंच जाएंगे। Otherwise, it was feeling like we would end up in a hospital instead of school. अब हम क्लासरूम में जा रहे हैं। Now we are heading to the classroom. सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं। All the children have come with their parents. Students, let's revise English sentences. I have taken an auto rickshaw to school. And now we have sat in it. The auto rickshaw driver is driving badly. Then I asked him to drive safely. Now finally, we have reached school safely. Otherwise, it was feeling like we would end up in a hospital instead of school. Now we are heading to the classroom. All the children have come with their parents. हमने टीचर को गुड मॉर्निंग कहा। We said good morning to the teacher. और उन्होंने हमें बैठने के लिए कह दिया। And she asked us to sit. और फिर टीचर ने नाम पूछकर मार्क्स बताए। And then the teacher asked the name and told the score. केवल मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे। केवल मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे। मैथ्स में इतने कम मार्क्स देखकर मैं हैरान थी। I was surprised to see such less marks in maths. मैंने टीचर से कहा कि गणित में इतने कम अंक नहीं आ सकते।
I told the teacher that it is not possible to get such less marks in maths. Students, let's revise English sentences. We said good morning to the teacher. And she asked us to sit. And then, the teacher asked the name and told the score. All subjects had good marks, except maths. I was surprised to see such less marks in maths. I told the teacher that it is not possible to get such less marks in maths. मुझे लगता है कि जरूर चेक करने में कुछ गलती हुई है. I think there must be some mistake in checking. टीचर ने कहा कि ये सभी अभिभावकों की शिकायत है. The teacher said that this is the complaint of all the parents. क्योंकि सभी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं. Because everyone's results have not as expected. मैंने भी प्रिंसिपल मैडम से दोबारा पेपर चेक करवाने के लिए कहा है. I have also asked Principal Madam to get the papers checked again. देखते हैं कि मैडम क्या एक्शन लेती है. Let's see what action Madam takes. Students, let's revise English sentences. I think there must be some mistake in checking. The teacher said that this is the complaint of all the parents. Because everyone's results have not as expected. I have also asked Principal Madam to get the papers checked again. Let's see what action Madam takes. दरअसल मैथ्स की एक नई मैडम की नियुक्ति हो गई है. Actually, a new teacher of maths has been appointed. जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं. Because of which all these problems have been created. लेकिन कोई बात नहीं, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा. But no problem, some solution will definitely emerge. और फिर मैडम ने आयुषी को रोज स्कूल आने के लिए कहा क्योंकि अटेंडेंस कम थी. And then Madam asked Ayushi to come to school daily because the attendance was less. फिर हम दोनों वहां से आ गए. Then we both came from there. Students, let's revise English sentences. Actually, a new teacher of maths has been appointed. Because of which all these problems have been created. But no problem, some solution will definitely emerge. And then Madam asked Ayushi to come to school daily because the attendance was less. Then we both came from there. आप भी ऐसे ही चलते चलते बहुत आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं. वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें. कीप प्रैक्टिस.